Hello viewers, the question is a pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of flux linkage with the other coil? So in this particular problem there are two coils, coil 1 and coil 2. In coil 1 there is a change in current and the current changes from 0 ampere to 20 amperes. The current changes from 0 to 20 amperes in 0.5 seconds, and we have to calculate the flux linkage, change in flux linkage with the other coil, that is for the second coil. Now we know that if there is an increase in current, it means that the change in flux linkage will occur in the second coil, and let us assume that the flux in the coil 2 is phi 2, and we know that the flux is directly proportional to the current in the first coil. So if there is a change in flux in the second coil due to the change in current in the first coil, so we have to write this proportionality sign, and to remove the proportionality sign we can write it as d phi 2 by dt is equal to m di1 by dt. It means that the rate of change of flux in the second coil is equal to the mutual inductance times the rate of change of current in the first coil. Now this dt cancels with this dt, so we can say that d phi 2 is equal to m di1. So this is the change in flux in the second coil, d phi 2. Now m, which is the mutual inductance, is given as 1.5 Henry, and the change in current is equal to the final current, which is equal to 20 ampere minus the initial current, which is equal to 0 ampere. After solving this value comes out to be 30 Weber. So this is the change in the flux in the second coil. This is the answer. तो एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि एक पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैं जिनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखी है, यानी कि m की वैल्यू दे रखी है 1.5 हेनरी। अगर पहली कॉइल में करंट चेंज होती है 0 टू 20 एम्पियर 0.5 सेकंड के अंदर, तो हमें बताना है कि कितना चेंज इन फ्लक्स लिंकेज होगा दूसरी कॉइल में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स में चेंज होगा सेकंड कॉइल में वो होगा ड्यू टू द चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल, या हम कह सकते हैं d2 बाई डी टी इज इक्वल टू m di1 बाई डी टी। यहाँ dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं d2 इज इक्वल टू m di1। यहाँ m है म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसकी वैल्यू गिवन है 1.5 हेनरी। चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल बराबर होगा द फाइनल करंट इन द फर्स्ट कॉइल माइनस द इनिशियल करंट इन द फर्स्ट कॉइल। फाइनल करंट हमें दे रखी है 20 एम्पियर और इनिशियल करंट दे रखी है हमें 0 एम्पियर। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकल के आती है 30 वेबर्स। सो दिस इज द चेंज इन द फ्लक्स इन द सेकंड कॉइल. This is our answer. So hope you understand the explanation. Thank you.